सो एंड यू ऑल नो कि आप लोगों का कि क्या हो रहा है कि आप लोगों का अभी जो यूपीएससी पैटर्न पूरा चेंज होने वाला है. Everything will be changed in this time when you are going to give your prelims. तो आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा आएगा. सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यूपीएससी पेपर सॉल्व करना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही हम लोग फायदे में रहेंगे. एंड सो आज मैंने क्या किया, 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी से हो या ओपीएससी से हो. So I have brought some questions to discuss before you all. So let's start. And what I want is give your answers in the comment box. So I want everyone to answer. और एक बात I want to say here is that see, this is our learning phase. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे गलती होने से is not a problem. But क्या होना नहीं चाहिए, एग्जाम पे गलती नहीं होना चाहिए. So this is the main thing. So इसलिए आप लोग क्या कीजिए, आप लोग क्वेश्चन मिलते ही आप लोग ट्राई कीजिए आंसर करने के लिए, क्योंकि आप लोगों का आंसर्स आएगा तो you will be it will be more clear to you all. Okay, so let's start with question number 1. Okay, which one of the following links all the ATMs in India? ये तो देखने में एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि इंडिया में जितने भी एटीएम्स हैं, इन 4 ऑर्गेनाइजेशन में से कौन लिंक करते हैं. सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया. आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल. Yes, yes. Here the correct answer is your C, National Payment Corporation of India. So National Payment Corporation of India is NPCI, जिसको शॉर्ट में हम NPCI कहते हैं. This is one. So यहाँ पे देखिए, National Financial Switch is the largest network of shared automated teller machines ATMs in India. It is designed, developed and deployed by Institute of Development and Research in Banking Technology in 2004 with the goal of interconnecting the ATMs in the country and facilitating convenience banking. So ये NFS है, National Financial Switch. So ये क्या है, और टेलर मशीन मतलब जो ATMs हम लोग जिससे हम लोग पैसा निकलते हैं. So लेकिन for linking all these things, ये काम किसका होता है? This is the work of your National Payment Corporation of India. Okay, come to next question. Which one of the following statement correctly describes the meaning of legal tender money? So now let me tell you about something what is called your legal tender money. So legal tender money क्या होता है? Should be not question 3, it should be question number 2. So what is legal tender money? So legal tender money is something which the government declares to be legal in India. अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि 100 rupees note has to be accepted by everyone in India. गवर्नमेंट ने जो 100 rupees नोट बनाया है उसको every Indian should accept it. Every Indian should accept it. And no one can deny its acceptance. गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोगों ने जो 100 रुपी नोट बनाया है, हर इंडियन को इसको एक्सेप्ट करना है. एंड इन इंडिया कोई भी उसको मना नहीं कर पाएगा. दिस इज नोन एज योर लीगल टेंडर.
सो गवर्नमेंट ने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। स्टेटमेंट नंबर 1 में देखिए, द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफरेड अ फी ऑफ लीगल केसेस। सो स्टेटमेंट नंबर 1 ने क्या कहा है कि लीगल केसेस में हम वकील को, लॉयर्स को जो पैसा देते हैं उसको कहते हैं लीगल टेंडर में। ऑप्शन बी में कहा है द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। सो ऑप्शन नंबर बी ने कहा है कि एक क्रेडिटर, who is a creditor, the person who gives loan is a creditor. So the creditor is under compulsion to accept. Now option number C ने कहा है the bank money in the form of checks, drafts, bill of exchange, etc. So bank money जो check के फॉर्म में होते हैं, drafts के फॉर्म में होते हैं, and the metallic money in circulation in a country. Metallic money मतलब the coins. So out of these 4 options, yes, correct answer is your option B. यहाँ पे देखिए एक वर्ड है under compulsion. So what is under compulsion? Legal tender money is what government ने कहा है कि one should accept it. So no one can deny in India. India में कोई नहीं कह सकता है कि हम रूपी को accept नहीं करेंगे. This is why option B is correct here. So legal tender is any official medium of payment recognized by law that can be used to extinguish a public or private debt or meet a financial obligation. The national currency is legal tender in practically every country. A creditor is obligated to accept legal tender toward repayment of debt. So अगर एक आदमी ने क्रेडिट दिया है और उसके बदले में कोई इंडिया में सपोज किसी ने लोन लिया है एंड उसके बदले में रूपी देना चाहते हैं, सो द क्रेडिटर कैनॉट डिनाई एक्सेप्टेंस. व्हाट विल हैपन इफ समवन डिनाई द एक्सेप्टेंस ऑफ लीगल टेंडर? अगर इंडिया में रह के मैं बोलती हूँ कि आई डू नॉट, मैं ये 500 रुपीज नोट एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो आई मे बी पुट बिहाइंड द बार्स, मुझे जेल भी हो सकता है. ये 500 रुपी नोट एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आई कैनॉट से दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट. सो लीगल टेंडर इज समथिंग व्हिच वी कैनॉट डिनाई टू एक्सेप्ट. ओके, इफ अ commodity is provided free to the public by the government, then तो अगर किसी commodity गवर्नमेंट फ्रीली प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, तो क्या हो सकता है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय, yes, what do you mean by opportunity cost? So see, it is a concept, opportunity cost. Opportunity cost is a concept in microeconomics. ये microeconomics का concept है, पर इसको apply कहाँ पे क्या है? Macroeconomics में. So opportunity cost मतलब क्या है? Opportunity cost is the cost of the best alternative. Best alternative. Best alternative मतलब suppose आप लोग का कल एग्जाम है and you all know कि you will have to pass in your exam. And आज आपका कोई एक फ्रेंड आके आपको बोलते हैं कि चलो मूवी देखने जाते हैं. So आप क्या करोगे? आप कौन सा चूज करोगे? बिकॉज कल आपका एग्जाम है, तो आप क्या करोगे? आप पढ़ोगे, आज मूवी देखने नहीं जाओगे. सो मतलब आपने वो अपॉर्चुनिटी, मूवी देखने का जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला था, आप वो खो दोगे. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो आपके पढ़ने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मूवी.
because you are invited by one of your friend to watch a movie. आप अगर मूवी देखने जाते तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन होता, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता आपका, लेकिन आपको क्या करना है, कल एग्जाम है इसलिए आज आपको पढ़ना है. You cannot go to the movie, so you have lost that opportunity. This why this is known as your opportunity cost. So अगर गवर्नमेंट फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं पब्लिक को तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0, ये तो हो ही नहीं सकता. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, ये भी नहीं हो सकता है. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक. देखिए, गवर्नमेंट अगर किसी को फ्री में चीज बांटते हैं तो गवर्नमेंट का ये क्या होगा? एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा. फ्री डिस्ट्रीब्यूशन. फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है गुड्स का बाय गवर्नमेंट, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा? गवर्नमेंट का क्या बढ़ेगा? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. सो गवर्नमेंट का ये जो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर कौन से एंगल से मेकअप करेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करेगा? टैक्स बढ़ा देगा, टैक्स को इंक्रीज कर देगा. सो ऑप्शन सी ने क्या कहा है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक. सो जो लोग टैक्स भर रहा है उन लोगों को और ज्यादा टैक्स भरना होगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर. So opportunity cost represents the benefits an individual. Opportunity cost मतलब क्या है? The benefits an individual, investor or business misses out on when choosing one alternative over another. तो आपने क्या चूज किया? पढ़ने का चूज किया क्योंकि कल आपका एग्जाम है. तो मूवी देखने से जो एंटरटेनमेंट, जो बेनिफिट, जो रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला था वो आपको नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने एक ऑल्टरनेटिव चूज किया. पढ़ने का जो आइडिया उसको चूज किया, ऑल्टरनेटिव. सो व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस पब्लिक सर्विसेज फॉर फ्री, आपको अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि आप पब्लिक सर्विसेज फ्री में मिल रहा है आप लोगों को, दिस वुड ऑलवेज कम एट ए कॉस्ट ऑफ somebody paying for it. तो गवर्नमेंट जब भी सब्सिडीज वगैरह ज्यादा देते हैं, स्कॉलरशिप्स ज्यादा देते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? चीजों का प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? गवर्नमेंट अगर मुफ्त में चीजें बांटेगा, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल शिफ्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक. ओके. So this question, increase in absolute and per capita real GNP. Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development. So question ने क्या पूछा है कि अगर इंडिया का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, अगर इंडिया का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, it do not connote a higher level of economic development. It will not signify as higher level of economic development if क्या होगा? Option A, industrial output fails to keep pace with agricultural output. Agricultural output fails to keep pace with industrial output. Poverty and unemployment increase. Imports grow faster than exports. So, सिर्फ
जीएनपी या जीडीपी बढ़ने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, कब नहीं होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस here. Industrial output fails to keep pace with agricultural output. तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है कंपेयर टू एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट ज्यादा हो रहा है, सो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल आउटपुट ज्यादा होगा, देन इट विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो यू सी, एग्रीकल्चर आउटपुट अगर बढ़ेगा, अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज होते हैं तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा इससे? फार्मर्स इनकम विल इंक्रीज, farmers income will increase. So when farmers income will increase, it will lead to economic development. So गवर्नमेंट ने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जीएनपी अगर बढ़ते भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज होते हैं। यहाँ ऑप्शन ए में कहा है कि एग्रीकल्चरल आउटपुट ज्यादा है, सो एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। नाउ कम टू इंडस्ट्रियल आउटपुट। सो इंडस्ट्रियल आउटपुट अगर इंक्रीज होता है, इंडस्ट्रीज का अगर अच्छा मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हो रहा है, वो लोग ज्यादा आउटपुट बना रहा है, तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट का इनकम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है, सो इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगा तब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होगा। कम टू ऑप्शन नंबर डी, imports grows faster than export. So import export ये सब, ये इंडस्ट्रियल आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सबसे क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देयर इज अ डिफरेंस। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है? ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव। एक्सपोर्ट बढ़ना, इंपोर्ट बढ़ना, ये सब क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड ऑलवेज यू रिमेंबर, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट is qualitative. Qualitative. Qualitative plus quantitative. Qualitative plus quantitative. So यहाँ पे बोला है कि जीएनपी बढ़ने से we cannot say it to be a development. So development, अब सोचिए, एक इकोनॉमी को डेवलपमेंट होने के लिए दो चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है हर इकोनॉमी में। जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी में वो क्या है? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते रहते हैं, कब इंक्रीज हो रहा है? एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियल इनपुट इंक्रीज हो रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उसके साथ अगर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, देन इट विल नॉट बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होने से क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, मतलब सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होना है, ग्रोथ के साथ क्या होना है? पब्लिक का, इंडिया का जो सिटीजन्स है, उन सब का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ना चाहिए।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ग्रो करना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। अगर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते रहते हैं, then it will not be termed as economic development. So here correct answer will be option C. You see here explanation में, economic growth does not necessarily connote economic development. So मैंने बोला ना कि डेवलपमेंट होने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना जरूरी है, सिर्फ इनकम बढ़ने से नहीं। जस्ट यू थिंक, एक फैमिली में देयर इज सपोज 6 मेंबर्स एंड उस फैमिली में जहाँ पे 6 मेंबर्स है, उस फैमिली में इनकम है, इनकम हो रहा है, उसका फादर सपोज जो हेड ऑफ द फैमिली, ही अर्न्स अ गुड इनकम, अच्छा इनकम मिल रहा है उसको, बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू सस्टेन द 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। पूरे 6 मेंबर्स को कंट्रोल करना या तो पूरे 6 मेंबर्स को चलाना इज नॉट, मतलब इट्स नॉट सस्टेनेबल, ही कैन नॉट अफोर्ड विथ हिज इनकम। सो उसका क्या हो रहा है, उसको इनकम मिल रहा है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, बट इट डज नॉट नेसेसरीली कॉनोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा, जब वेलबीइंग ऑफ पॉपुलेशन होगा rather than only increased income. Well-being of population rather than only increased income. So, as the question clearly mentions effects on development, we must take into account impact of poverty and unemployment on economic growth, despite having good parameters of progress in growth per capita income. So, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफेक्ट्स ऑन डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा है। सो डेवलपमेंट का इफेक्ट कौन करेगा डेवलपमेंट को, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन सी। ओके, सो कंसिडर दिस स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट is better explained in terms of a process which enables so now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या जानना जरूरी है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कंसेप्ट इज बेटर explained in terms of a process which enables, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड इन 4 स्टेटमेंट्स में से आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन बी होगा ना। सो देखिए, ह्यूमन कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? सो capital means your wealth. Capital means wealth. So wealth can be again your property. Property भी आपका capital हो सकता है, आपका money भी capital हो सकता है। So gold भी आपका एक wealth मतलब एक capital हो सकता है। So now what is human capital? ह्यूमन कैपिटल इज योर, क्या क्या आएगा ह्यूमन कैपिटल में, नॉलेज, स्किल, ये सब होता है ह्यूमन कैपिटल। मतलब एक आदमी, इंडिया के पॉपुलेशन में कितना नॉलेज है, कितना स्किल है, जितना ज्यादा होगा उतना इंडिया का ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा। So question ने क्या पूछा है, human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables. So statement number 1 ने क्या कहा है, individuals of a country to accumulate more capital. कब होगा human capital? When individuals of a country to accumulate more capital, increasing the knowledge, skill levels and capacities of the people of the country,
accumulation of tangible wealth, accumulation of intangible wealth. So what is the difference between tangible and intangible? So tangible wealth means your all those things, property, money, gold, shares, ये सब क्या है? tangible. tangible मतलब आप लोग जो टच कर सकते हो, जो देख सकते हो, टच कर सकते हो, इसको कहते हैं tangible. And what is intangible? Intangible are जो आप लोग टच नहीं कर सकते, आप उसको देख भी नहीं सकते. एक आदमी को जब आप देखोगे, उसके गले में अगर एक गोल्ड का चेन होगा, वो आपको दिखेगा. उसके हाथ में अगर एक गोल्ड का ब्रेसलेट होगा, या तो एक बहुत मतलब कॉस्टली वॉच होगा, वो आपको दिखेगा. लेकिन उस आदमी में क्या क्वालिटी है, क्या स्किल है, कितना नॉलेज है, वो नहीं दिखता है. वो कब दिखेगा? जब हम उस आदमी को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब वो दिखेगा. सो नॉलेज, स्किल, कैपेसिटी, ये सब क्या होता है? ये सब होता है योर intangible wealth. So what will be the correct answer? I want answer from your side. I have explained the question. I have explained all the statements. Now I want answer from your side. कब होगा human capital formation? मैम ऑप्शन सी होगा 2 and 4. Yes. So you see, individuals of a country accumulate more capital. This is wrong. Increasing the knowledge, skill levels, and capacity of people of the country. This is right. Accumulation of tangible wealth. ये human capital formation नहीं है. And accumulation of intangible wealth. So the correct answer is your option C is your correct answer. So capital formation is a physical capital. I have explained all these things. So these are all the statements explanation. So intangible wealth of a nation is comprised of skill, population, human resource, culture, etc. Tangible is gross capital formation. It involves largely infrastructure and components. Okay, come to the next question. So despite being a high saving economy, so ये question number 7 में क्या कहा है? Indian economy में saving अच्छा है. Capital formation may not result in significant increase in output due to. So you see, एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, एक इकोनॉमी में सेविंग्स क्यों जरूरत है? Why people need savings? आदमी जितना कमाते हैं उससे अगर उसका भी अच्छे से चल रहा है, so he can live with them. तो सेविंग्स का क्या जरूरत है? So why we need savings? Because ये जो सेविंग्स है, सेविंग्स से लोग क्या करते हैं? सेविंग्स से लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं. इन्वेस्टमेंट. सो जब इन्वेस्टमेंट होगा तब क्या होगा? तब जाके चीज बनेगा, आउटपुट होगा. पैसा लगाएगा तब जाके कुछ बनेगा ना, आउटपुट तब होगा. सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डेस्पाइट बीइंग हाई सेविंग इकोनॉमी, हाई सेविंग इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमी में सेविंग इज हाई, सेविंग इज हाई. कैपिटल फॉर्मेशन may not result in significant increase in output. So savings high है, लेकिन output क्यों low हो रहा है? Options are weak administrative machinery,
illiteracy, high population density, high capital output ratio. So what will be the correct answer? इंडिया में सेविंग्स है तो मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सो इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी क्यों मतलब so output low है? Yes, the correct answer is your option B, high capital output ratio. So capital output ratio क्या है? The amount of capital output ratio indicates the amount of capital required to produce 1 unit of output. So 1 unit output produce करने के लिए कितना capital चाहिए? Suppose bread को एक ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए कितना रुपीस चाहिए? सपोज 15 रुपीस. सो सिर्फ एक यूनिट ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए 15 रुपीस. सो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? 15:1. 15:1 इज द कैपिटल आउटपुट रेशियो. सो कैपिटल ज्यादा होने से क्या होगा? आउटपुट हमेशा कम ही होगा, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो ये बहुत इट्स वेरी हाई. यू सी एग्जांपल दिया है यहाँ पे. If 5 units of capital is used to produce, 5 units of capital is used to produce only 1 unit of cloth. एक कपड़ा बनाने के लिए अगर 5 unit of capital required, suppose machine 5 मशीन लगा के एक शर्ट बनते हैं, तो will that production be efficient? No, the production is inefficient. एक शर्ट को बनाने के लिए अगर 5 मशीन चलाना पड़ता है, then that production is your inefficient. कॉस्टिंग ज्यादा आएगा क्योंकि 5 मशीन चला के सिर्फ एक शर्ट बनेगा, so कॉस्टिंग ज्यादा आएगा. So if capital output ratio is high, despite saving high and generating enough capital, our output may not grow significantly because the capital output ratio is high. This may be a result of poor technology or poor management. अगर एक ब्रेड को बनाने में 15 रुपीज चाहिए, सो अगर एक आदमी के पास सपोज उसके पास 100 रुपीज है, तो वो कितना ब्रेड बना पाएगा? मैक्सिमम 8 ब्रेड. सो 100 रुपीज कैपिटल लगा के अगर सिर्फ 8 ब्रेड बनेगा, then obviously this capital output ratio will be very high. So option here correct answer is your option D. Okay. This is a question taken from Reserve Bank of India. So consider the following statements. The Reserve Bank of India manages and services Government of India securities, but not any state government securities. Treasury bills are issued by Government of India, and there are no treasury bills issued by state government. And treasury bills offered are issued at a discount from the par value. So treasury bill. So treasury bill. Now what is treasury bill? Let me explain you about treasury bill. So first thing is that a treasury bill is nothing but a certificate. It is a certificate. यहाँ पे क्या लिखा होता है? Treasury bill. And who signs this treasury bill? It is signed by RBI governor. So it is signed by RBI governor. So it is the instrument. It is a government instrument, security instrument. अगर कोई गवर्नमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो he can buy this treasury bill from Reserve Bank of India.
he can buy this treasury bill from Reserve Bank of India. So ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल में क्या लिखा होता है? सपोज मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 1 lakh for 6 months at the rate of 5%. ऐसे लिखा हो, सो ऐसे लिखा होता है. सो यहाँ पे क्या है? Treasury bills are offered at discount price. Suppose this is a treasury bill of 100 rupees. And इस 100 rupees treasury bill में आपको कितना मिलने वाला है? 5%. So 100 rupees का 5% कितना होता है? 5% of 100 is 5 rupees. So मतलब आपको 6 months बाद, after 6 months you will be getting 5 rupees if you are investing rupees 100. अगर 100 इन्वेस्ट करते हो आपको 105 मिले, मतलब आपको 5 रुपीज मिलेगा. दिस इज व्हाट इज रिटन इन दिस ट्रेजरी बिल. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट आपको 6 महीने के बाद पैसा एक्स्ट्रा नहीं देते हैं. गवर्नमेंट क्या करते हैं? आपको क्या मिलना चाहिए था? आपको 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिलना चाहिए क्योंकि आपको 5% देने वाला है. बट गवर्नमेंट क्या करते हैं? जब आपको ये बिल सेल करेगा तब आपसे वो लोग 100 रुपीज नहीं लेगा. आपसे कितना लेगा? 95 रुपीज लेगा. 95 रुपीज लेके आपको ये बिल दे देगा. आफ्टर 6 मंथ्स जब आप उस बिल को लौटाने जाओगे तो आपको उस समय क्या दे देगा? ये 100 रुपीज दे देगा. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? आपको 5 रुपीज मिलना था प्रॉफिट, सो आपको 5 रुपीज मिल जाए. आपको 105 रुपीज नहीं मिलेगा. मतलब ट्रेजरी बिल्स आर ऑलवेज ऑफर्ड एट डिस्काउंटेड प्राइस. डिस्काउंट देते हैं. 100 रुपीज का ट्रेजरी बिल आपको 95 में दे देगा. अगर 10% होगा तो आपको 90 रुपीज में दे देगा. एंड आफ्टर 6 मंथ्स आपको जब वो लौटा देंगे आपको 100 रुपीज दे देगा. मतलब आपका 10 रुपीज प्रॉफिट होना था वो हो गया. So and one thing is just treasury bills are issued only by the central government. It cannot be issued by any state government. Okay, so the options देखिए अभी. The Reserve Bank of India manages and services Government of India securities, but not any state government securities. So government securities अगर हम बोलते हैं, अगर if I use the word government securities, if I use the word government securities, it not only denotes treasury bill. Government securities can be of various forms. गवर्नमेंट का कुछ भी शेयर्स हो सकता है, सिर्फ ट्रेजरी बिल ही डिनोट नहीं करते हैं. तो ऑप्शन 2 ने क्या कहा है? ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. करेक्ट. आई हैव टोल्ड treasury bills offered are issued at discount price. Yes, correct. And Reserve Bank of India manages and services Government of India securities, but not any state government securities. This is one. क्योंकि state government का security भी हो सकता है, सिर्फ treasury bill state government का नहीं होता है. So here correct option is your option C. Option C is your correct answer. So here is the explanation. So already I have explained all these things. So I have given it in the written form. Okay. With reference, next question. With reference to Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, consider the following statement. So Kaushal Vikas Yojana क्या है? So Kaushal Vikas Yojana जानने के लिए we'll have to know क्या क्या होता है. So
Kaushal Vikas Yojana come to all the states. It is a flagship scheme of the Ministry of Labor and Employment. It, among other things, will also impart training in soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy. It aims to align the competencies of the unregulated workforce of the count to the National Skill Qualification Framework. So you see, Kaushal Vikas Yojana. So Kaushal Vikas, Kaushal means what? Kaushal means your skill. So Skill Vikas Yojana, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं. Skill Vikas Yojana. So मतलब गवर्नमेंट क्या चाहते हैं? स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं. So you see, ये किस मिनिस्ट्री का हो सकता है? Obviously, it cannot be Ministry of Labor and Employment. So ये कभी भी Labor and Employment Ministry का नहीं हो सकता है. It should be of Ministry of Skill Development का होगा. Okay. Among other things, will also impart training in soft skill, entrepreneurship, financial and digital literacy. Yes, कौशल विकास करना है तो इन सब में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा. This is correct. So कौशल विकास क्यों करना चाहेगा? It aims to align the competencies of the unregulated workforce of the count to the National Skill Qualification Framework. So जो unregulated workforce है, जितना भी अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स है उन सभी को टू ब्रिंग टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. यस, देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. And 2 and 3 are correct. The objective of this skill certification scheme is to enable a large number of Indian youth to take up industry relevant skill training that will help them in securing a better livelihood. Individuals with prior learning experience or skills will also be assessed and certified under recognition of prior learning. So it is a मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये एक प्रोग्राम है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा आप लोगों को मतलब आई विल गिव द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, सो यू विल गेट अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा ऑफ दिस स्किल, सो यू कैन गो थ्रू इट. Okay, so consider the following statement. Capital adequacy ratio. So what is capital adequacy ratio? पहले वो जानना बहुत जरूरी है. कैपिटल एजुकेशन रेशियो, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? कैट. दिस इज अ टर्म रिलेटेड टू योर बैंकिंग का एक टर्म है. सो कैपिटल एजुकेशन रेशियो is the amount that banks have to maintain in the form of their own fund to offset any loss that banks incur if the account holder pays to repay dues. So capital adequacy ratio क्या होता है? सपोज बैंक 100 रुपीज लोन देते हैं तो बैंक को क्या करना होगा? a certain percentage, ये जो रेशियो होता है, इट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई. ये आरबीआई डिसाइड करते हैं क्या कितना होना चाहिए.
So a certain percentage, suppose maybe 20%, suppose 20% एक 100 रुपीज का लोन देने से 20 रुपीज शुड बी केप्ट असाइड, अलग से रखना होगा 20 रुपया, 20 रुपया अलग से रखना होगा। क्योंकि देखिए बैंक जब लोन देगा टू 1000 पीपल, 1000 लोगों को अगर लोन दे देते हैं, देयर इज चांस दैट 500 पीपल विल डिफॉल्ट, 50% पीपल मे डिफॉल्ट। अगर वो डिफॉल्ट कर देते हैं, बैंक लोन किस पैसों से देते हैं? कस्टमर्स डिपॉजिट से, कस्टमर्स डिपॉजिट से। सो कस्टमर्स का जो डिपॉजिट है उससे बैंक लोन देते हैं। जो पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं वही पैसों से बैंक लोन देते हैं। अगर लोन डिफॉल्ट हो जाता है, अगर लोन खराब हो जाता है, तब क्या होगा? तब ये हम लोगों का जो डिपॉजिट हम लोग जब विड्रॉ करने जाएंगे तो बैंक हमको वापस कैसे करेंगे? इसीलिए क्या होता है, बैंक को एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है। मतलब बैंक अगर लोन देगा 100 रुपीज तो बैंक को 20 रुपया अलग से रखना है। क्योंकि 1000 आदमी को अगर लोन देगा, देयर इज अ चांस दैट 500 पीपल में डिफॉल्ट। I cannot write here will, I should write here may. 500 people may default. So अगर ये 500 people default कर जाते हैं, remaining 500 पे कर देते हैं, तो ये 500 people का जो पैसा है वो कहाँ से हम लोग वापस करेंगे? From this CAR जो हम अलग से रखते हैं। And I already told you कि CAR is decided, यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन 2 में दिया है each individual बैंक। So बैंक individually decide नहीं कर सकते हैं। Okay, yes, of course, your correct answer is A. You see, it is decided by central bank. So what is this? Which is the Central Bank of India? Central Bank is your Reserve Bank of India. So बैंक क्या होगा? बैंक अगर पूरा का पूरा पैसा लोन दे देगा, कल अगर कोई पैसा निकलने जाते हैं, बैंक उसको मना कर देना पड़ेगा। बट दिस इज बैंक वो नहीं कर पाते हैं, किसी का पैसा बैंक मना नहीं कर पाते। Okay, this is a question from your National Food Security Act. So, National Food Security Act was passed in 2013. So, इस क्या-क्या दिया हुआ है? See, this is your this is your statement number 1, this is 2, this is 3. Okay. So statement number 1 ने क्या कहा? The families coming under the category of below poverty line only are eligible to receive subsidies and food grains. So the people who comes under BPL only are eligible to receive subsidies and food grains. Option statement number 2 ने क्या कहा है? The eldest woman in a household of age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of ration. Pregnant women and lactating mothers are entitled to take home ration of 600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter. So, let us understand something about National Food Security. National NFS, National Food Security Act. So it was passed in when? 2013. So National Food Security Act में only BPL categories को रेशन नहीं मिलते हैं, APL को भी मिलते हैं
एंड बीपीएल को भी मिलते हैं। ये नॉट ऑल एपीएल, सब एपीएल को नहीं मिलते हैं। देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, बट इट इज नॉट दैट इट्स ओनली बीपीएल को ही मिलता है, एपीएल को भी मिलते हैं। एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो पास किया है 2013 में, उस एक्ट का मेन एम है, एक फीचर क्या है, ये प्रेग्नेंट वुमेन एंड lactating mother, pregnant woman and lactating mother, so उन लोगों का भी ध्यान रखते हैं। मतलब द थिंग इज दैट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक एम क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टेटिंग मदर? सो लैक्टेटिंग मदर इज someone who feeds her child, मतलब जो माँ बच्चे को दूध पिलाते हैं उसको लैक्टेटिंग मदर कहते हैं। सो इन दोनों कैटेगरी वुमेन को, ये दो कैटेगरी वुमेन को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अंडर दिस एक्ट। फूड सिक्योरिटी एम ऑफ दिस एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक एम क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। And other thing is that female member, head female member of the house is entitled to get the ration। सो जो सबसे हेड, मतलब फीमेल मेंबर जो हेड है, सपोज इट मे बी ग्रैंड मदर, इट मे बी मदर, बट फीमेल मेंबर जो हेड है, सबसे बड़ा है फैमिली में, उसके नाम पे ही रेशन कार्ड बनेगा। एंड ये नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक एम क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वी हैव 17 sustainable development goal. We have 17 sustainable development goal, जिसको हम SDGs कहते हैं। सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिया। सो हम लोगों का कितना है? 17. We have 17 sustainable development goal, and out of this 17 sustainable, और कब तक अचीव करना है ये गोल? We'll have to achieve it by 2030. Now ये 17 sustainable development goal जो है, उसका एक गोल है, one goal is your no hunger. नो हंगर इज वन गोल। सो ये नो हंगर गोल को अचीव करने के लिए ये एक्ट हेल्प करते हैं। नो हंगर गोल जो है उसको अचीव करने में ये एक्ट हेल्प करते हैं। सो इसीलिए नॉट ओनली बीपीएल, एपीएल का भी कुछ क्राइटेरिया रख के उन लोगों को भी देते हैं, एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को भी देते हैं फूड सिक्योरिटी। सो come to this question, the families coming under the category of BPL only are eligible to receive subsidized food rates. Now what will be the correct answer? ओके, यहाँ पे एक बात है, ये तो मैंने बता दिया कि दे आर ओनली बीपीएल इज नॉट एलिजिबल, एपीएल आर आल्सो एलिजिबल। सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। ऑप्शन 2, the eldest woman in a household of age 18 years or above. So
18 years और above जो है eldest women, उसके नाम पे इशू होगा रेशन कार्ड. This is correct. Now you see, pregnant women and lactating mothers are entitled to take home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter. So, घर में ration नहीं देते हैं. They are not entitled to take home. घर में नहीं ले जा सकते हैं. They are given like Horlicks, Bonvita, ये सब देते हैं. And you see, this is also wrong. So correct answer क्या होगा? B is the correct answer. Only 2 is the answer. Come to the explanation. So you see, statement 1 ने क्या कहा था? Only BPL. But you see here, overage and entitlement under target public distribution system. Up to 75% of the rural population and 50% of the urban population will be covered under TPDS, with uniform entitlement of 5 kg per person per month, not restricted to only BPL families. So statement 1 galat hai. It is not restricted to only BPL families. Statement 3, pregnant women and lactating mothers and children in the age group of 6 months to 14 years will be entitled to meals as per prescribed nutritional norms under integrated child development services, midday meal schemes, etc. And यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ था, एक ऑप्शन दिया हुआ था कि 1600 calories per day, but it's not 1600, it's 600. You see, 600, not 1600 calories. So इसलिए option number 3 is also wrong. An eldest woman of the household of 18 years or above to be the head of the household for the purpose of issuing ration card. This is statement number 2. And we have told you, I have told you that statement number 2 is right. So here the correct answer will be option B. I hope it's clear. So let's move on to the next question. Okay. With reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statements. Public sector bank ko chalane, governance is your running of a public sector. So capital infusion into the public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. To put the public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent State Bank of India has been effected. So 2 statements are given here. First statement क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूजन कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट पैसा डाल रहा, मतलब पैसा लगा रहा पब्लिक सेक्टर बैंक, एंड to put the public sector bank in order. So public sector बैंक को एक पूरे ऑर्डर में रखने के लिए एसबीआई के साथ, एसबीआई का बहुत सारे एसोसिएट बैंक्स थे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मुंबई, स्टेट बैंक ऑफ इलाहाबाद, ऐसे करके बहुत सारे एसबीआई का एसोसिएट बैंक्स थे. सो पब्लिक सेक्टर बैंक को अच्छे से चलाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अदर एसोसिएट बैंक्स के साथ मर्ज कर दिए. सो दीज आर द 2 स्टेप. नाउ कैपिटल इन्फ्यूजन गवर्नमेंट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट कभी भी बैंकों को पैसा नहीं देते बैंक को चलाने के लिए. तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. एंड गवर्नमेंट ने क्या कहा था, किया था, स्टेट बैंक के साथ अदर बैंकों को मर्ज कर दिया गया. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो एनपीए कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बैंक मर्जिंग शुरू किया.
तो हम लोग न्यूज में सुनते हैं ना कि बैंकों को मार्च कर दिया जाएगा, सिर्फ 3 या 4 बैंक रहेगा। सो क्यों किया है ऐसा गवर्नमेंट ने? ओनली बिकॉज टू रिड्यूस द एनपीए। बैंकों, एनपीए क्या होता है? बैंकों का जो लोन खराब होता है उसको कहते हैं एनपीए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन बी। Okay, let's move on to next question. Okay, this is again a simple question, but a very important question. GST bill, which came into implementation on 1st July 2017 is? Option A. So, bill number 122, Act number 101, bill number 123, Act number 98, bill number 119, Act number 100, bill number 101, Act number 97. Very important question. Yes. Option A. Yes. Bill number 1122 and Act number 101 is the correct answer. Correct answer. You see, the bill was first introduced in 2014 as the Constitution 122nd Amendment Bill. This got approval in 2016 and was renumbered in the statute by Rajya Sabha as the Constitution 101st Amendment Act 2016. Always remember, ये question बहुत important. Okay. This is the question of again your monetary policy. So, to lower the interest rate, RBI should. Interest rate को अगर कम करना है, तो RBI क्या करेगा? Option is buy securities, decrease the money supply, raise the treasury bill rate, raise the reserve requirement. So interest rate को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? सॉरी, आरबीआई क्या करेगा? So, interest rate. Option B. Interest rate. Interest rate, suppose interest rate हाई कब होता है? जब आरबीआई नहीं चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोन हो. नाउ आरबीआई चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो. मतलब आरबीआई क्या चाहते हैं? अभी लोन ज्यादा हो एंड मार्केट में ज्यादा पैसा जाना चाहिए. सो मार्केट में जब ज्यादा पैसा जाना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम होने का इम्प्लीकेशंस क्या है कि मार्केट में पैसा अवेलेबल होना चाहिए. सो आरबीआई अगर मनी सप्लाई डिक्रीज कर देते हैं, तब क्या होगा? मार्केट में पैसा अवेलेबल नहीं होगा. आरबीआई अगर टी बिल रेट को बढ़ा देते हैं, तब भी क्या होगा? आरबीआई अगर ट्रेजरी बिल रेट को बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था जहां पे 5% दे रहा था, अभी सपोज 15% देगा, तो क्या होगा? पब्लिक विल इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल, तो क्या होगा? तब भी मनी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा. रेज द रिजर्व रिक्वायरमेंट. So reserve requirement is about your CRR and SLR. So ज्यादा से ज्यादा मनी मार्केट में अवेलेबल कब होगा? जब लोन्स होगा. सो लोन होने के लिए बैंकों के पास ज्यादा से ज्यादा मनी होना जरूरी है. सो अगर बैंकों के पास कब ज्यादा से ज्यादा मनी होगा? जब CRR and SLR will come down.
ऑप्शन डी ने कहा है रेज द रिजर्व रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट को सीआरआर भी इंक्रीज कर देते हैं, एसएलआर को भी इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा, ये इट विल रिजल्ट इन लेस मनी विच बैंक, लेस मनी विच बैंक। सो लेस मनी विच बैंक होने से क्या होता है, देयर इज लेस मनी इन द मार्केट। सो जब बैंकों में पैसा कम है लेकिन लोन ज्यादा डिमांड है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लेस मनी विद द बैंक विल लीड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज लेफ्ट इज बाय सिक्योरिटीज। सो आरबीआई अगर सिक्योरिटी खरीदेगा, आप ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में सोचिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वहां पे क्या हुआ था, आरबीआई ने सिक्योरिटी सेल किया था। जब आरबीआई ने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी किया। आरबीआई सिक्योरिटी कब बाय करेगा, जब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगा, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई चाहते हैं कि मार्केट में पैसा अवेलेबल हो, सो लोअर द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी कब लो होगा, जब पैसा अवेलेबल हो, तो उस समय आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई विल बाय सिक्योरिटीज। ओके, नाउ कम टू व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है, इसको एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सो relative poverty and absolute poverty. Absolute poverty is nothing but your real poverty. मतलब जो रियली पॉवर्टी जो है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जो मतलब रियली पुअर है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, इफ वी कंपेयर विथ समथिंग, if we compare with something. सपोज अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन का जो इनकम है उसको अगर हम यूएसए पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं, देन इंडिया का जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो बहुत बड़ा फिगर होगा। ऑब्वियसली इंडियन पॉपुलेशन अर्न्स लेस देन यूएस पॉपुलेशन। सो अगर हम किसी के साथ रिलेट करते हैं या तो कंपेयर करते हैं, उसको कहेगा रिलेटिव पॉवर्टी। और जो रियल में है वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एंड आई होप यू ऑल नो कि इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन किससे किया जाता है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया is done on calorie intake. लोगों को कितना कैलोरी का खाना मिल रहा है, उस फिगर से पॉवर्टी एस्टिमेशन करते हैं इन इंडिया ऑन कैलोरी इंटेक। सो देयर आर वेरियस कमिटी जो अलग अलग बोलते हैं, लेकिन वन इज डेट 2100 कैलोरी in urban areas, 2400 calorie in rural areas.
सो इससे अगर कम कैलोरी कोई इंटेक कर रहा है, देन ही विल बी टर्म्ड एज पोवर्टी, पुअर पीपल, और उस कैटेगरी ऑफ पीपल को कहेगा पोवर्टी. So what do you mean by absolute poverty? The question is asking about absolute poverty. Poverty in terms of absolute number of people? No. Poverty in terms of prevailing price level से related poverty नहीं होता है. Poverty in terms of absolute level of unemployment. So poverty in terms of basic minimum calorie requirement. So I have told you कि poverty is based on इंडिया में poverty estimation किसके साथ करते हैं? Yes. So calorie requirement के basis पे poverty को करते हैं. So this is why the correct answer here is option B. Absolute poverty refers to when a person or household does not have the minimum amount of income needed to meet the minimum living requirements needed over an extended period of time. उसके पास minimum वो income नहीं होता है जो चाहिए. Okay, answer this question. First, I want answer of this question from your side, then I will explain. Nationalization of bank was done with the purpose of financing the industries, improving the credit facilities, consolidating the economy, improving security of deposits. From option C. Give your answer in the comment box. So, nationalization of banks कब हुआ? In 1969 and in 1980. So 1969 में 14 banks हुआ था and 6 banks in year 1980. So nationalizations of bank क्यों हुआ था? Nationalization of bank इसलिए हुआ था because before 1969 all banks were in the private sector. And private sector क्या करते थे? Private sector does not give importance to the rural economy. Rural economy में उसका मतलब they do not open a branch in rural economy. So rural economy का जो farmers थे या तो rural population में जो लोग थे जिसको पैसों की जरूरत थी, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग मनी लेंडर्स से पैसे लेते थे. और वो आप लोगों को पता है कि मनी लेंडर्स क्या करते थे? वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे. So they don't go to the rural parts and they don't open their branches in rural area, and even they don't give credit to the rural people. So ये सब देखते गवर्नमेंट ने सोचा कि रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि 1969 में अर्बन पॉपुलेशन इतना नहीं था, रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था. सो गवर्नमेंट ने क्या किया? बैंकों को नेशनलाइज्ड कर दिया, प्राइवेट से इन लोगों को गवर्नमेंट के अंदर लेकर आए, नेशनलाइज कर दिया. सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया था ओनली बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग द क्रेडिट फैसिलिटीज.
because credit facilities in rural areas was very problematic. They were not, because all were private bank and they were not going to the rural areas. So to improve the credit facilities, banks were nationalized. Let's move on to the next question. What is gilt-edged security? Gilt-edged security. Securities issued by multinationals, securities issued by government, securities issued by private sectors, securities issued by joint venture companies. So it is, the answer is securities issued by the government is known as gilt-edged security. Securities issued by government is known as your gilt-edged security. See, gilt-edged securities refer to high-grade bonds that some national governments and private organizations issue in an effort to generate revenue. So government को अगर पैसा चाहिए तो इनकम चाहिए, रेवेन्यू इज योर इनकम. गवर्नमेंट को अगर किसी भी तरीके का इनकम चाहिए या तो पैसों की जरूरत होता है, सो गवर्नमेंट क्या इश्यू करते हैं? गिल्ट-एजेड सिक्योरिटीज बोलते हैं उसको. ये हाई ग्रेड बॉन्ड्स दैट सम नेशनल गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. सो कभी कभी इट्स नॉट ओनली इश्यूड बाय गवर्नमेंट बट बाय बिग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो issue gilt-edged securities. So it gilt, इसको सिर्फ गिल्ट्स भी कहते हैं. And these securities were originally issued by the Bank of England. So these are the some questions of 2018, previous year questions of 2018. And in our next class, we will again continue with the previous year questions of 2019. I hope ये आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा इस सेशन से. इस वीडियो will help you because आप जितना भी बुक्स पढ़ लो, आप जितना भी नोट्स बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, then only you will come to know कि कौन से टॉपिक्स, कौन सा टॉपिक, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. इट्स ओनली यू फॉर you will come to know only by solving the previous year questions. So I hope this video is very helpful to you. If you really like the video, share this video because आप share करोगे तो किसी का help हो जाएगा. And if you really like the video, then press the like button. So thank you everyone. Good night.